Now the story takes another turn, another stage. The first line of this new para is, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Seema Puri. Acquaintance माने परिचय, परिचित, परिचय. I am acquainted with you. मेरा आपसे परिचय है. He is acquainted with Mr. XYZ. उसका Mr. XYZ से परिचय है. So the line says, my acquaintance with the barefoot rag pickers. लेखक बार बार barefoot की बात कर रहा है और संभवतः वह इसकी बात करते हुए बताना चाह रहा है, probably he want to tell us how poor these people were, that they could not afford a pair of shoes, and with this barefoot they are walking in and into all those kind of dirty places. But maybe because of the tradition. Even if they have money, they will not buy shoes. So now he says, now my connection with these people, my acquaintances with these boys takes me, leads me to a place called Seema Puri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. A place in the periphery of Delhi, yet a miles away from it. What is that periphery? If this is Delhi, then places around Delhi, far away from Delhi, but in the outskirts of Delhi will be called periphery. Periphery मतलब सीमा पर, सीमाओं पर, बॉर्डर में, छूते हुए, सीमाओं को छूते हुए. So the author says, the narrator says, इन बच्चों से जो मेरा परिचय है, जो नंगे पाँव हैं, इनसे मेरा परिचय अब मुझे कहाँ ले जाता है? अब मुझे ले जाता है उस जगह पर जहाँ पर ये नंगे पाँव चलने वाले रैग पिकर्स मुझे ले जाते हैं. उस जगह का नाम है सीमा पुरी. जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इट्स ऑन द बॉर्डर, सीमा पर है, बॉर्डर ऑफ दिल्ली. दिल्ली में रहते हुए भी ये जगह दिल्ली से बहुत दूर, एंड दैट इज मेटामॉर्फिकली. एक विरोधाभास है कि दिल्ली में तो हैं कहने को, लेकिन दिल्ली से फिर भी कोसों दूर हैं. दो मायने हैं इसके. भौगोलिक रूप से भी हम दूर हैं. इसका मतलब ये बच्चे भौगोलिक रूप से भी दूर हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली की बाहर की सीमा पर हैं, और उसके साथ ही साथ दिल्ली इनके लिए दूर है. फॉर देम दिल्ली मीन्स व्हाट? Nothing more than a place where rich people live, where those who possess power and money, they live. For them, these people, for these poor rag pickers, Delhi is far away. It means that wealth is far away. It means that richness is not there. The power is not there. They are far, far away from power, from wealth. And so, the author points out metamorphically, एक मेटामॉर्फिकली ऑथर कहते हैं कि ये सीमापुरी में रहते हैं जो दिल्ली से तो लगा हुआ है पर दिल्ली से बहुत दूर भी है. मेटामॉर्फिकली, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ जो लोग रहते हैं, author says, those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. Way back in 70. आपको याद होगा, you must remember that India fought a war with Pakistan in 1971 in the month of December. And during this fight, Pakistan was forced to declare one of its portion as independent country.
That part was earlier called East Pakistan. In the map that you see, where is East Pakistan? This is West Pakistan, and East Pakistan and West Pakistan were one country before 1971, separated by a country called India. When India and Pakistan fought the war of 1971, Pakistan was forced to declare East Pakistan as an independent country, and East Pakistan became Bangladesh after independence in 1971. Right? During this war between India, Pakistan and Bangladesh, a lot of people suffered a blow. They had to move, run for life from one place to another. And the result was that because of this war, many of the refugees were forced to come out of Bangladesh. लड़ाई के कारण क्या हुआ कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत की ओर अंदर अपनी जान बचाने के लिए आ गए, क्योंकि उनके परिवारों के साथ पाकिस्तानी सैनिक बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे, बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे, और इसलिए वो लोग भाग के भारत में आए शरणार्थी के रूप में. शरणार्थी मीन्स रेफ्यूजी, REFUGEE, RUFEGEE, refugees. So large number of Bangladeshis came into India during the 1971 war with Pakistan, looking for shelter, sharan lene ke liye, looking for shelter, and many of them came down and they spread to the whole country, and many of them came down to Delhi in search of gold. You remember the very first sentence where a boy by the name Sahib says, कि I do this work searching for gold, for a coin. उसी खोज में, अपने जीवन यापन को बनाने की खोज में, 2 जून की रोटी की खोज में ये लोग दिल्ली तक आ गए थे, और साहेब की फैमिली भी उनमें से एक थी. Who are squatters who came from Bangladesh way back in 1971. Sahib's family is one among them. Sahib's family is one among them. उन लोगों में से साहब का भी परिवार एक था जो बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आया था और सीमापुरी इलाके में बस गया था. Simapuri was then in wilderness. Simapuri was then in wilderness. A wilderness. Simapuri उस समय एक जंगली इलाका था. दिल्ली के बाहर की ओर, दूर की ओर, एक ऐसा इलाका जहाँ कोई रहता नहीं था. झाड़ झंकार थे, शहरी सभ्यता से अछूता था. वहाँ ये लोग आके बसे, और आज भी वह एक तरीके से वाइल्डरनेस थी. एंड इवन टुडे इट इज स्टिल, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. आज भी वह जंगली इलाका हो गया है, वाइल्डरनेस में है, लेकिन खाली नहीं है. अब वहाँ भीड़ है. किन लोगों की भीड़? शरणार्थियों की भीड़. These people have come in large numbers, settled down in that periphery of Delhi, in the area called Simapuri. Simapuri, those days, during 1970-71, was a barren land. Nobody would live there that time. It was a jungly ilaka. But now, with all these Sharanarthis, refugees coming here, this area had not been empty now. There were a large number of people, Sharanarthis, refugees, but it was still a wilderness. अभी भी वो एक जंगली इलाका ही था. यहाँ जंगली का जंगल नहीं है, यहाँ है अव्यवस्थित इलाका. Disorganized, unorganized. Because these refugees had come, they settled down in small patch of land. Whatever they could grab on, they lived there. They built a shanty, 4 walls,
and started living small area. That area is still wilderness, but it is no longer empty, says the author. अब वो खाली नहीं है. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. See the condition of the people, very well described by the author in one line. And what he says is, in structure of mud, mud मतलब कीचड़, मिट्टी, मिट्टी से बने हुए ढांचे के मकान हैं, कमरे हैं, एक एक कमरे, with roof made of tin and tarpaulin. जो छत है वो या तो टिन से ढक दिया है और या उसके ऊपर टारपोलिन डाल दिया है या केवल टारपोलिन से बनाया है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मतलब विदाउट, बी विदाउट. माई माइंड इज डिवॉइड ऑफ एनी गुड थॉट, माई माइंड इज डिवॉइड ऑफ एनी न्यू आइडिया. अभी मेरे मन में कोई नए विचार नहीं आ रहे हैं, खाली है दिमाग. Your suggestion is devoid of any reasoning. तुमने जो सुझाव दिया है उसमें कोई तर्क नहीं है. Your suggestion is devoid of reasons. तो devoid of, devoid के साथ हमेशा of शब्द आता है, याद रखेंगे. Devoid is always followed by preposition of, of. And so what the author says is, that place where people in 10,000 people live now, it was not empty anymore. 10,000 people lived. They lived in small shanties, small rooms with roof made of tarpaulin or tin shade, tin structure, and it did not have sewage system, SEWAGE, proper sewage system, नाली, गंदे पानी को निकालने की, निकासी की व्यवस्था नहीं थी. सीवेज सिस्टम मीन्स गंदे पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था, नाली के सिस्टम. नो प्रॉपर सीवेज, नो प्रॉपर ड्रेनेज, नालियाँ नहीं थी, ड्रेन से बना ड्रेनेज या रनिंग वाटर का कोई प्रावधान नहीं था, बहते हुए पानी का कोई प्रावधान नहीं था. ड्रिंकिंग वाटर, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर dirty water to flow off. There was no provision for dirty material to go off. There was no provision for drinking water around. But how many lived? 10,000. So such a place may have large number of humans now, but it was still a wilderness. It was still a jungly kind of place. Right? They have lived here for more than 30 years now. They came in 1971-72, and they have been living here for more than 30 years. पिछले 30 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, मतलब स्थायी निवासी हो गए, वहाँ की जीवनचर्या में ढल गए हैं. They have adapted themselves to that way of life, of living in small shanties. And remember, the author says that Sahib's family is also living there. And if you recall, in the beginning, author was told by Sahib that they had a house near Dhaka. Imagine from Dhaka to Delhi how long they must have travelled in search of food and shelter. In search of food and shelter, how much they have travelled from Dhaka to Delhi. Maybe barefoot, maybe in trains in general compartment, facing winter, facing extreme heat of summer, facing rains. They all walked and walked and walked in search of food and started settling down on way. रास्ते में वो बसते चले गए, कुछ लोग 10,000 लोग करीब दिल्ली आ गए. And it's now 30 years. They had come from Dhaka, and in Dhaka, around Dhaka, they had land. They had a house, but that land and house
because of constant storms, would get washed away. लगातार तूफानों के कारण उनकी जो ज़मीन है, उनका जो मकान है, वो बह जाता था। ज़मीन में जो भी उपजाते थे वो बेकार हो जाता था। So from that beautiful land of greenery, they now come down here and live in shanties. For the last 30 years they are living. And they are living without an identity of their own. कोई उनकी अपनी पहचान नहीं थी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसी से बनता है आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। So they had no identity. They were lost kind of people. खोए हुए लोग जैसे वहाँ पे पूरी भीड़ रहती थी। Without permits but with ration card to get their names on voters list. These people had been living here for the last 30 years. Author says they had no identity, no address of their own, and no permission to live. Permission. Nobody had permitted them to live. किसी ने अनुमति नहीं दी थी उन्हें रहने की। अनुमति पत्र नहीं था उनके पास। Permit means अनुमति पत्र। कोई अनुमति पत्र भी नहीं था, but they had ration card. And from ration card they could make their names in the voter list. और वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में अपना नाम वो डलवा लिए थे। और राशन कार्ड के बल पर इट एनेबल देम टू बाई ग्रेन माने अनाज, इनेबल माने समर्थ करना, टू इनेबल मतलब समर्थ करना। राशन कार्ड से वह अनाज खरीदने में अब समर्थ हो गए थे। with no permits but with ration card to get their names on voters list, and that enabled them to buy grains. What a condition, क्या स्थिति थी। Food is more important for survival than an identity. Underline that line. Food is more important for survival than an identity. Survival means जिंदा रहना, जीवन के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है बजाय पहचान। ये लोग तो भोजन की खोज में यहाँ तक आए थे, इस उम्मीद में कि शायद भारत की जो राजधानी है दिल्ली, जो अमीरों का शहर है, देश की राजधानी है, वहाँ उन्हें 2 जून की रोटी आराम से मिलेगी। तो इसलिए यहाँ आए थे वो, पहचान के लिए नहीं। पहचान से ज़्यादा जरूरी उनके लिए क्या था? फूड वॉज मोर important matter for them to live on, for them to keep alive. For survival means to keep alive. If at the end of the day we can provide our family, we can feed our family and go to bed without any this thing, then we would rather live here than in the field that gave us no grain. See the beautiful line. If at the end of the day, यदि दिन के समाप्त होते होते we can feed our families, अपने परिवार को खिला सकते हो, and go to bed without an empty stomach, और बिस्तर में बिना खाली पेट सो सकते हूँ, तब we would rather live here than in the fields that gave us no grain. यहाँ हमको 2 जून की रोटी मिल जाती है, जहाँ हम खाली पेट सोने से बच जाते हैं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उस खाली खेतों में जिससे हमको कोई अनाज नहीं मिल रहा था। ये कोई कहता है उनमें से, somebody says that, says a group of women in tattered saris. How come this women have come suddenly? I told you that this group of rag pickers, they have taken the authoress, the lady, the writer, to Simapuri.
after many months. And when Simapuri she reaches, she looks around, what is Simapuri like? What kind of houses Sahib Ji and his group lives? Then she looks around, she finds tattered houses. She finds no sewage system, no drainage system. She also finds people living in small houses with roof made of tin or tarpaulin. No drinking water facility. People have no identity card, no permits, and so on and so forth. So she asked the women, why have you come here? My God, how come you live in this kind of condition? Such kind of dingy, bad conditions. So from among the women living there, somebody replies that at least here we get 2 times of meals. At least here we are able to sleep with our stomach full. यहाँ पर कम से कम हम पेट भर सकते हैं और फिर सोते हैं, खाली पेट नहीं सोते. There in Dhaka, where we were living, we may have the field, we may have the house, but what is the point there in having such field which could not give us grain? ऐसे फील्ड, ऐसे खेत होने से क्या फ़ायदा जिससे हमको अनाज नहीं मिल रहा था. और अनाज क्यों नहीं मिल रहा था? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्टॉर्म्स, लगातार आते हुए तूफानों के कारण उन खेतों की फसल सब चौपट हो जाती थी. So the poor lady's reply says a group of women with tattered saris, अस्त व्यस्त फटी हुई साड़ियाँ पहनी थी. When I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers, I asked them, I means the authoress. Authoress ने जब पूछा कि why did you leave that beautiful green land? Why did you leave that beautiful place having lot of rivers? Then the women replied, one of them, we left to fill our stomach. We left that place with the hope that the new place where we are coming will give us 2 times meals. So that is the reason. Where do we find the food? We now find the food here. जहाँ भी उनको भोजन मिल जाता है वो वहाँ पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं. Wherever they find feed, they pitch their tents. To pitch means तंबू गाड़ना. Pitch करना मतलब गाड़ना. Tent means तंबू. So wherever we find food, women further say, wherever we find food, we pitch our tents and that becomes our transit home. Transit means अस्थाई. कुछ समय के लिए वो हमारा घर हो जाता है. Children grow up in them. बच्चे उसमें बड़े होते हैं. Becoming partners in survival. और सर्वाइवल में, जीवन में ये हमारे पार्टनर बन जाते हैं. पार्टनर कैसे बनते हैं? जीवन के लिए भोजन जुटाने में, जिंदा रहने के लिए भोजन जुटाने में ये बच्चे भी हमारे अब सहयोग करने लगते हैं. कैसे? रैग पिकर बन के. ऐसे छोटे मोटे गंदे काम करते हुए ये बच्चे जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिली है, किसी तरह का एजुकेशन नहीं मिला है, पैसा नहीं है, वो बच्चे 2-4 रुपए कमाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते हुए दे हेल्प द फैमिली. So the women go on describing the reason why they have come all the way from that beautiful land to this place. And they say कि with the passage of time, समय के साथ, our children also become our partner in struggling for survival. जिंदा रहने के लिए वे हमारे पार्टनर बन जाते हैं. And survival in a place called Simapuri means रैग पिकिंग. सीमापुरी में रहना और रहते हुए सर्वाइवल का मतलब क्या है? रैग पिकर बनना. क्योंकि वहाँ पर कचरा बीनने का ही काम होता था. बहुत कचरों के अंबार से बीन के कुछ लाना, फिर उसको बेचना, यही सीमापुरी के लोगों का जीवन था. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Through the years,
समय के साथ वर्ष जैसे जैसे वर्ष गुजर गए, वर्षों के गुजरते गुजरते, थ्रू द ईयर्स, दिस rag picking has acquired the proportion of fine art. Acquire मतलब पाना, to acquire पाना. I have acquired good wealth. I have acquired knowledge. I have acquired your support. So to acquire means प्राप्त करना, पाना, to acquire. Through the years, it has acquired the proportion. Proportion मतलब सीमा. सीमा मतलब बॉर्डर नहीं, सीमा मतलब दायरा, इतना बड़ा. Proportion of a fine art. Fine art. Underline this. Fine art means एक अच्छी कला का इसने एक रूप ले लिया है. It has acquired the proportion of a fine art. It means what? It is a pronoun for what? Rag picking. रैग पिकिंग जो है, कचरा एक बीनने का जो काम है, उसने इतने वर्षों में कला का, एक बढ़िया कला का रूप ले लिया है. What does it mean? It means over the years these children have become very smart. An art and a skillful art. समय के साथ साथ ये एक अच्छी कला बन गई है जिसमें ये बच्चे पारंगत हो गए हैं. They have understood where to go, when to go, what to collect, and what is the possibility of getting some material that can get them few coins. What are the chances of getting few coins also, and so on and so forth. कचरा बीनना भी एक कला है, says the author. Even rag picking is an art. देखा जाए तो झाड़ू लगाना भी एक कला है. Sweeping is also an art. Sweeping the floor is an art. Everybody can't sweep the floor the way a regular sweeper sweeps. You and me, if we are sweeping the floor, we would know that it demands a special art. एक खास तरीके से ही सफाई झाड़ू लगाया जा सकता है. And for that matter, anything and everything is an art. So this is a beautiful line by the author. It seems that for children, they have acquired the proportion. It seems that the children have learned this art so perfectly well. It has acquired the proportion of a fine art. The author further says that to them, garbage is gold. उनके लिए जो कचरे के ढेर होते थे, गार्बेज जो होता था, वह एक सोने की तरह था. It was like gold. It was gold for them. It is their daily bread. It is their daily bread and butter. A roof over their heads, even if it is a leaking roof. यहाँ जो आए हैं सीमापुरी में, वहाँ जो गार्बेज हैं, वहाँ से जब वो निकलते हैं गार्बेज की खोज में, तो एक कुशल कलाकार की तरह वो निकलते हैं. Because they know how to collect, where to go, what all to pick up and how to pick up. कैसे खोजें, how to search, how to scrounge. And so they call it, it's like their gold. जो भी कचरे का ढेर था वो उनके लिए एक सोने का भंडार था, सोना जैसा था. It is their daily bread, author says further. ये उनका भोजन ही तो है, यहीं से तो उन्हें भोजन मिलता है. It is their roof over their heads. इसी के बल पर तो वो यहाँ रहते हैं और उनको छत मिली हुई है. Even if the छत is leaking, to leak मतलब लीक होना, मतलब निकल जाना कहीं से. पेपर लीक होता है, आप लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चन पेपर इज लीक्ड, द टैप इज लीकिंग, नल लीक कर रहा है.
यानी पानी उसमें से निकल रहा है बंद होने पर भी। लीक कर जा मतलब रास्ता बना के कुछ निकल जाना, लीक करना। सो टू लीक, इवन इफ द रूफ इज लीकिंग, यदि छत से पानी टप टप भी गिर रहा है तो भी उनको ये जगह बहुत प्यारी है, क्योंकि यहीं से उनको भोजन मिलता है, यहीं पे उनका गोल्ड है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। ऑथर सेज बच्चों के लिए और भी ज़्यादा है ये जगह, और ज़्यादा खास है। इट्स वेरी वेरी important for them, this place. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says. साहिब कहता है मुझे कई बार इस गार्बेज से 1 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं, कई बार तो 10 रुपए का नोट मिल जाता है। ये साहिब का कहना था। सोचिए, think that boy is happy at getting 1 rupee coin or maybe 10 rupee note, and his name is the Lord of the universe, Sahib-e-Alam. Sahib says his eyes lighting up. Light up मतलब चमकना, आंखें चमक जाती हैं जब वो कहता है कि मुझे यहाँ पर, when he says that I get 1 rupee coin, that I get at times, कभी कभी at times I get even 10 rupee note, and his eyes get lighted up. Sahib is happy. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब कभी सिल्वर का कॉइन मिल जाता है, एक कॉइन मिल जाता है उस हीप ऑफ गार्बेज, हीप माने झुंड, हीप यानी झुंड, गार्बेज यानी कचरा, कचरे का झुंड यानी हीप ऑफ गार्बेज। व्हेन यू गेट ए हीप ऑफ गार्बेज एंड यू फाइंड 1 सिल्वर कॉइन, खोज वहां खत्म नहीं होती। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, because there is hope that you might get a golden coin also. You might get 1 more silver coin. So you continue to scrounge in that with the hope of getting more and more coins. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. Author says, ऐसा लगता है, it seems means ऐसा लगता है, that for children, garbage is not only a place where waste is dumped. For them, it is something else. For them, it is much more than that. For the children, it is wrapped in wonder. एक अजूबा है। For them, garbage, the heap, is a kind of wonder. जहाँ कुछ भी मिल सकता है, सिल्वर का कॉइन मिल सकता है, 1 रुपए का नोट मिल सकता है, 10 रुपए का नोट मिल सकता है, तो वो एक अजूबे की तरह वहाँ जाते हैं। But for the elderly people, it is a means of survival. लेकिन बड़ों के लिए, उन बच्चों की माताओं के लिए, उनके पालकों के लिए, वे शरणार्थी के रूप में जो आए हैं, उनके लिए ये तो सर्वाइवल का मामला था, जीवन मरण का प्रश्न। See how the garbage is seen by children. For children, garbage is a place where they get some coins. Happy with that. Sahib gets a 10 rupee note also. He tells the narrator and he feels very happy. But for parents, that garbage is a place where that gives them 2 meals food, because from garbage the children bring some coin if they are lucky. That coin helps these people to buy some food for them. For the elders it is a means of survival. जीवन मरण के लिए का माध्यम है, मीन्स माने माध्यम।
means madhyam. So here we learn what garbage means to different people and how the narrator is trying to explain away, to explain the interpretations of garbage, interpretation by two different sets of people, the children and the elderly people. The narrator herself goes to Simapuri and inquires from the women folk what made them come here. यहाँ क्या ऐसे क्या था जो यहाँ आए? And the women say they came here in search of food. Let's now go to few difficult words which we have come across in this paragraph, in this part of the story, before we move to the next part of it. The scene is Simapuri. The writer is there with the children, and the writer is observing things. And in the course of observation, she notices few things. उसका ध्यान कुछ चीज़ें आकर्षित करती हैं. सीवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे मकान, एंड सो ऑन. एंड देन शी enters into conversation with women living there and asks them why she has come, why they have come all the way from Dhaka to this place. And you know the reply, that they said they came for survival. They came here for bread and butter. Then you also learn that the children feel that this garbage is something, a place, kind of a wonder for them. It gives them few coins at times. But for the elderly, it is a place of survival. So here some word, acquaintance we did. Acquaintance means jaan pehchan, parichay, as I told you. Periphery means bahari seema, outskirts. In English, another word is outskirt. Shahar ki bahari seema. Then another word was metamorphically, यानी symbolically. Symbolically यानी प्रतीकात्मक रूप से. Metamorphically. What is that metamorphically? In what context is the word metamorphically used here? Metamorphically, Delhi is just around, Simapuri is just around Delhi, away from Delhi. But though it is not far away from Delhi, but Delhi is far away for the people, for the young boys who live there. Delhi is far away. What does it mean? I explained to you. It means the things that Delhi represent is beyond their reach. दिल्ली जिस चीज को दर्शाता है, प्रगति को, विकास को, धन को, पावर को, ये सारी चीजें सीमापुरी पर रहने वालों के लिए बहुत दूर हैं. और ये सारी चीजें कहाँ हैं? दिल्ली में हैं. So Delhi is near yet so far, we can say. So metamorphically means symbolically. Squatters means those who live illegally. Squatters, those who settle down. ऐसे लोग जो बस जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, कोई परमिट नहीं है उनके पास, कोई परमिशन नहीं है, कोई पेपर के मकान के नक्शे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्क्वाटर्स. सो दे वर स्क्वाटर्स. वाइल्डरनेस मतलब वेस्ट लैंड. मैंने बताया जंगली बीहड़ इलाका, बंजर इलाका. When 1971 they came, this place was a waste land. It was wilderness. And author says, even now after 30 years, it is wilderness. But not in terms of men and women. Not empty anymore. अब खाली नहीं है. Wilderness तो है अभी भी, लेकिन खाली नहीं है. 10,000 लोग आ गए हैं. But wilderness in terms of very disorganized life. It doesn't have anything other than human beings. So, Bihar, Banjar, wilderness.
टारपोलिन, सी द स्पेलिंग। आप जानते हैं टारपोलिन जिसको हम बोलते हैं ट्रक के ऊपर बिछता है, या छतों में, टिन की छत में, कई घरों में आप देखेंगे नीले रंग का टारपोलिन बिछाते हैं, ट्रक के ऊपर एक हरे रंग का टारपोलिन डाला रहता है। उसकी स्पेलिंग देखिए, TARAU, TARAU, tarpaulin, LIN. So note the spelling. Tarpaulin, it's a waterproof material for protecting you from water. Devoid of, without. Devoid of means without. Bina, ke bina means devoid of. This house is devoid of any furniture. यह जो मकान है बिना किसी फर्नीचर के है। इट इज डिवॉइड ऑफ एनी लाइफ, यह जो जगह है यह निर्जीव है, इसमें यहाँ यह जब किसी तरह की जान यहाँ नहीं है। सीवेज मीन्स ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर, ड्रेनेज सिस्टम फॉर, ड्रेनेज मीन्स नालियाँ, ड्रेन वाटर। सिमिलरली आइडेंटिटी मीन्स परिचय, रिकग्निशन मीन्स मान्यता, पहचान। इन लोगों की कोई पहचान नहीं, दे हैड नो रिकग्निशन। टू इनेबल मीन्स, टू इनेबल मीन्स टू अलाउ, करने देना। इट इनेबल्स देम टू मेक राशन कार्ड। राशन कार्ड आप जानते हैं, आप सबके पास है, हम सबके पास है। राशन कार्ड के आधार पर हमें भोजन मिलता है। राशन, RATION, राशन। Rationing means what? That you find out. ये राशन शब्द कहाँ से आया? You find out from the dictionary. Do a bit of research and find out from the dictionary what is the meaning of the word ration. So ration card बनाने के लिए इनको ये पात्रता देता है, and they got the ration. It enabled them to get the ration card. It allowed them to have the ration card. अनाज, grains. सर्वाइवल मीन्स, जैसा मैंने कहा, लिविंग, जीने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डोमेन। दिस इज एब्डोमेन, स्टमक जिसको बोलते हैं, उसी हिस्से को, उसी के लिए दूसरा शब्द है एब्डोमेन। तो आई हैव पेन इन माई एब्डोमेन, मुझे अपने पेट में दर्द हो रहा है। आई हैव पेन इन माई एब्डोमेन, राइट। सो एब्डोमेन, ABDOMEN means stomach. Another word. Similarly, tatter, tattered मैंने बताया फटी हुई साड़ियाँ, चिथड़ा बना हुआ। Tattered sarees. The author says the women wearing tattered sarees, चिथड़े जैसा, फटे हुए कपड़े। All in tattered, कब फैला हुआ, अस्त व्यस्त। So tattered means चिथड़ा। Next word that you have is acquire. I told you to acquire means to have, to develop in the shape of. To acquire means to develop in the shape of. Proportion means roop, and it's beautifully used here. It has acquired the proportion of a fine art. उसने एक कैसा रूप ले लिया है, अख्तियार कर लिया है, एक फाइन आर्ट की तरह, एक कला की तरह। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोफेशन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक अच्छी कला की तरह वह बन गया है। वह मतलब क्या? कचरा बीनने का काम एक कला की तरह अख्तियार कर लिया है लोगों ने। डर्ट मीन्स कूड़ा कचरा। लीक करना मतलब मैंने आपको बताया, लीक करना मतलब पानी का निकलना, चूना, पानी का चूना जिसको बोलते हैं। न्यूज़ भी लीक होती है, खबरें भी लीक होती हैं, प्रश्न पत्र भी लीक होता है। सो लीकिंग मीन्स किसी चीज़ का चूना, निकल जाना, रास्ता बना के निकल जाना। टू लाइट अप, चमकना। हीप मीन्स झुंड, माउंड, माउंड। एंड द लास्ट वर्ड इज मीन्स, मीन्स साधन, ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविका का साधन, ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लर्निंग इज ए मीन्स ऑफ गुड कैरियर,
राइट। एक कैरियर पाने का साधन है क्या? पढ़ना। पढ़ना साधन है, अच्छी पढ़ाई, लर्निंग।